Hello, this is Zafar Ali Khan with our 12th episode. We are here, and I hope that every one of you will be in best of health during these COVID times and would be safe, would be at home. Today, we are going to discuss repeat and while loops, condition based loops, with major implementations at O level and for the introduction at AS level. Uh, we are having Sir Muhammad Ali Faisal with us, and he would be online with us. Unfortunately, due to some technical issues, he is unable to share his camera. His camera is not helping him nowadays. So he won't be able to show his picture, but meanwhile, he will be there to discuss the uh, lecture and everything. Meanwhile, we are expecting to have questions. If there are any questions, please do pose them. Now I transfer uh, the show to Sir Muhammad Ali Faisal. Sir Muhammad Ali Faisal, please. Thank you for having me on your show. It is a pleasure to be working with you and to be a guest at your show. You're most welcome, sir. Please start. So, the topic that we have discussed was repeat loop and while loop. So, loops, as we all know, can be classified as iterative statements. An iterative statement is in coding is something that repeats itself until a given condition. So in the previous classes, I am expecting, and I have seen that conducted an episode for the for loop. So the for to next loop, I will give a little introduction, a brief introduction about for to next loop is that a for loop repeats itself in a given set of range. So for loop के चलने की जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारी नंबर ऑफ रिपीटिशंस जो हैं वो नॉन होती है. For instance, if I were to if I were to write a pseudocode where I had to print a movie that is coming out on 20th May. For example, X-Men's new movie is being released on 20th May and I want to post it 100 times. So what I will do is that I know that the number of repetitions will be times 100. So what I can do is I can initialize a for loop by writing for counter is equals to 1 to 100. So this is the basic initialization required to run a for loop. And in this, so what will this loop do? The output generated will be this string X-Men is releasing on 20th May 2020 and this put it 100 times. But there are some scenarios where we see that how many times an execution is required. Sometimes don't know how many students there are in a project that I want to write, I want to calculate the average heights of all the students. The developer, I was not given the number. So I can have a condition until a given condition is met, and then you can stop that loop over there. So if that condition is met, then that is called a conditional loop. And we have two kinds of conditional loop, that is repeat until loop and while do and while loop. So give a little introduction about the first loop, repeat loop. I would like a past paper question.
So the first question we have in conditional loop is that write a pseudocode that inputs positive numbers, rejects any negative number, calculates and displays the mean of the positive one will stop the program. So we need to write a loop. We need to write a pseudocode, or I will be writing the code for this program that will take all the positive numbers that are greater than 0, and if there are any negative numbers, it will reject them and displays the mean of the positive numbers. Take if -1 is input, only the key to stop this program is then this loop or this execution will stop. So what I can do here, for to first terminate negative numbers and will end the program. Do here is I will take two variables. I will declare them as positive num and negative num. Then repeat loop in studio is do until. Uh, console.writeLine, please enter a positive number. Number is greater than 0, then +1 and use to assessment that will be num here. Okay. So take input for now first. After console.readline, take input. GG sir. No, so console.readline num is equals to console.readline. Okay. So what is happening here is that we have a variable called num, and we are going to take it as input. It can be a positive number, negative number, or any number. So if it is greater than 0, then positive number will be greater than that. It will take the and if else if so Just else would be enough. Yes. it's less than number is rejected. Please enter number again. What we can do now is we can take the num is equals to console.readline.
So we have our basic condition set up कि अगर नंबर पॉजिटिव 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर की वैल्यू के अंदर नम की वैल्यू ऐड कर दो। पॉजिटिव नंबर शुरू में मेरे पास जो है उसकी वैल्यू 0 थी, बट आगे जाके मैं सबसे पहले जब मैंने वैल्यू ली 4 और 5, so that then if 5 is greater than 0, that 5 value will be added into 0 plus 5 will be the 5. So this is our basic if then else. How will I do it if number of repetitions that will take in my do is I can encapsulate all of this to a repeat loop. Until loop until. एक सेकंड, Okay. सिंटैक्स एरर आ गया। Do loop until. डू पर लिख दिया इसको मैंने, डू उसका आगे num is equal to -1, तो फिर ये एवरेज का एक वेरिएबल हो जिसके अंदर एवरेज कैलकुलेट हो जाए। सो अनदर वेरिएबल दैट आई नीड इज एवरेज equals to count as integers. And what else do I need? I need is what count is. So count is equals to count plus 1. And so every positive num divided by count, console.write line, your average is positive average. We can see here हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स को हमें इनपुट लेना है। तो पॉजिटिव नंबर की कंडीशन क्या होती है कि नंबर 0 से बड़ा हो। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर के अंदर टोटल को ऐड कर ले। तो आई कैन रीनेम दिस वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव टोटल, इसको मैं नाम रख देता हूँ। पॉजिटिव टोटल एंड ये हो गया। And finally, ये हो गया। So let's run this code and see what are errors out here. Okay. And let's see what is happening. Okay. So enter a positive number, and it is going to ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसको एक दफा कर लेते हैं। console.write line, please enter a positive number. इसको मैं ओके। सो अब ये मुझसे बार बार पॉजिटिव नंबर मांग रहा है। प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर 50, 45,
If I write -2 तो देखते हैं क्या करता है. Number is rejected, please enter number again. So I'm gonna write 33, 65. एंड अब मुझे इस लूप को एंड करना है, तो इस लूप को एंड करने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, वो है -1. ओके, सो मेरे पास क्या आ गया, योर एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज 53. तो -1 पे आके जब उसने -1 को लूप में लिया तो उसके पास ये चीज एंड हो गई. इससे हम क्या समझ सकते हैं, के ऊपर आता हूँ. लूप भी कहते हैं एंड इज यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क एंड देन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट. To run at least one time or the loop is executed until the given condition is true. तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, मगर इसको अगर मैं एक बहुत सिंपली समझाऊं कि वही है कि ट्रू नहीं हो जाती. सही है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ फादर who kicks his son out of the house and do not come back until you become successful. तो उसके घर वापस आने की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता. तो अभी कामयाब क्या है, 2 साल गुजर गए, बच्चे ने करी, कामयाब हुआ, फॉल्स, स्टिल फॉल्स. कोई क्राइटेरिया जो फॉल्स करता है वो अभी तक चल रहा है, अभी तक बच्चा घर नहीं आ सकता. बट देन एट वन टाइम बच्चा कामयाब हो गया, ही मेड अ लिविंग आउट ऑफ हिमसेल्फ, हैड अ फाइन करियर, हैड अ कार. सो अब उसकी कंडीशन सक्सेस की क्या हो गई, ट्रू हो गई. सो व्हेन दैट कंडीशन बिकेम ट्रू, सो दैट लूप विल एंड. तो इस लूप के खत्म होने की कंडीशन क्या है कि ये रिपीट लूप के खत्म होने की कंडीशन क्या है, दैट द कंडीशन हैज टू बिकम ट्रू. इट विल कीप ऑन रनिंग until the condition becomes false. सही है. इसकी एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं. दैट इज yes, this would be good. The third one. Tickets are sold for $20 each. No more than 25 tickets can be bought in a single transaction. एक टिकट की प्राइस जो है वो $20. टिकट्स हैं वो 25 से ज़्यादा बॉट नहीं. तो अगर कोई 26 ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको रोक दिया जाए. Write a pseudocode which asks the user he wants to buy and calculates the cost of the number of tickets bought along with the discount. Buying 10 or more tickets will give a discount of 10%, whereas buying 20 or more tickets will give a discount of 20%. Print the final cost of the tickets. Again, इसको करने के सबसे पहले तो इसका सूडो कोड लिख लेते हैं. तो हमारे पास हमें करना क्या है कि भाई एक टिकट जो है वो टिकट की कॉस्ट क्या है, ये कांस्टेंट है. टिकट प्राइस इज $20. और उसके बाद फिर हमें ये पता है कि हमें सबसे पहले यूजर से पूछना है भाई वो कितने टिकट्स बाय करना चाहता है. व्हाट आई कैन से इज दैट रिपीट हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय. मुझसे कंप्यूटर ने सवाल पूछा और उसके बाद फिर मैं उसको इनपुट, यूजर उसको कर दे इनपुट नंबर ऑफ टिकट्स. दिस इज द नंबर ऑफ टिकट्स दैट आई वुड लाइक टू बाय. सो नंबर, okay, how many tickets would you like to buy? Number of tickets until number of tickets is greater than 0 and number of tickets is less than 26. कंडीशन में ये लोग तब तक चले है जब तक यूजर 20 या 0 से कम टिकट डालता रहे, इज लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं.
0 या 0 से कम टिकट्स नंबर ऑफ टिकट्स डालता रहे, तो उसको ये एरर मैसेज देता रहे और बोलता रहे कि हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय एंड प्लीज एंटर। एक और मैसेज भी लिख देते हैं, फ्रेंड प्लीज एंटर नॉट मोर देन 25 टिकट्स। तो मैंने एक छोटा सा ये एक वेरिफिकेशन चेक बना लिया कि पहले यूज़र जो है वो नंबर ऑफ टिकट्स डालेगा और उसके बाद फिर अगर वो 0 से कम होंगे या 0 के बराबर होंगे, 26 से ज़्यादा होगा, तो ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। इसी को हम कोड करके देखते हैं। डिम नम ऑफ टिकट्स, एक वेरिएबल में बना देता हूँ, नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू एज इंटीजर, उसका डेटा टाइप होगा हमारे पास, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले मुझसे यूज़र पूछेगा, पहले मैं लूप के बाहर ही मैसेज लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन हाउ मैनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय एंड नाउ डू लूप अंटिल। तो मेरा फॉर्मेट बन गया। अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर टिकट्स बिटवीन 0 to 25 एंड अब मैं यूज़र से इनपुट कर लेता हूँ नम ऑफ टिकट्स इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे क्या होगा, अब यूज़र मेरे बाहर एक दफ़ा लिखा हुआ आएगा कि कितने टिकट्स बाय करना चाहते हैं, और उसके बाद ये लूप कब होगी, प्लीज एंटर, यूज़र इसके अंदर अपने नंबर ऑफ टिकट्स डाल देगा और इसके अंदर मैं रोकने की कंडीशन लगा देता हूँ अंटिल नंबर ऑफ टिकट्स लेस नंबर ऑफ टिकट्स greater than or equal to 26। इस वैलिडेशन चेक को चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद फिर उसको आगे कोड करते हैं। सो आई वुड लाइक टू बाय 26 टिकट्स। तो इसने मुझे बोल दिया ये प्लीज एंटर टिकट्स बिटवीन 0 to 25। इसका मतलब मेरा लूप चल रहा है। अगर मैं 25 से बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरा लूप चल रहा है। एक दफ़ा और इसको टेस्ट कर लेते हैं। 28 बिल्कुल चल रहा है। अगर मैं 0 डाल दूँ तो भी ये 0 को भी एक्सेप्ट, वेरिफिकेशन लूप मेरा सही चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ 24 टिकट्स मुझे बाय करने या 14 टिकट्स बाय करने, तो ओके लिख लेता हूँ करके देखते हैं। मुझे इशू दिख रहा था इसके अंदर। सो आई वांट टू बाय 14 टिकट्स। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन के अंदर कुछ इशू आ गया है, क्योंकि 14 टिकट्स जो हैं वो उस पर यह चल रहा है, मगर ये लूप हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए था। ओके, so what we have to do here is we need to stop executing this loop and we need to check the condition. Okay, मैंने sudo code में क्या कंडीशन लिखी थी इसकी? The part about being a programmer is actually debugging your code as you see. कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपने अपनी लॉजिकल स्टेटमेंट्स को भी देखते रहना होता है कि what kind of errors you are encountering. The number of tickets is less than equal to 0. I think यहाँ पे अगर मैं इसको और करके देखूँ मेरे पास चल जाना चाहिए। No. जीरो, इसको डिफाई करके देखते हैं।
ओके, इसको कंडीशन को जरा सही कर लें दोबारा एंड तो ये लूप कब खत्म होना चाहिए? जब हमारे पास 0 से ज़्यादा टिकट हों और 26 से कम टिकट हों। सो अगर मैं 15 ले रहा हूँ तो 15 पे मेरा करता है, अगर मैं 28 टिकट्स ले रहा हूँ तो 28 पे मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है। तो नाउ माई कंडीशन इज फिक्स्ड, अब ये सही चल रहा है। What I need to do now is coming back to the question. Write a pseudocode which asks the user how many tickets he wants and calculates the cost of the number of tickets. So I want to calculate the cost of all the tickets bought along with the discount. Okay. इसको भी जरा नीचे कर लेते हैं। तो हमारी no more than 25 tickets can be bought in a single transaction. अब हमारी ट्रांजैक्शन पूरी टिकट्स खरीद ली है। अब मुझे उन 20 टिकट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। मेरे पास क्या थी, वो $20 थी, तो मैं उसको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे डिम टिकट कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20। अब जो है मेरे पास, अब उसने जितने टिकट्स बाय किए थे उसके हिसाब से उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है। बाइंग 10 और मोर टिकट्स विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड अगर मैंने 10 से भी कम टिकट बाय किए तो मेरे पास कुछ भी जो है वो डिस्काउंट नहीं आएगा। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ टिकट्स इज लेस देन 10 is equals to अच्छा सर है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। ओके, सो इफ नंबर ऑफ टिकट्स इज लेस देन 10 देन मेरे पास डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंटेड बी इक्वल टू 0। Number of tickets is less than 20, then discount will be 0.1%, because 0.1 जो होता है वो 10% होता है। और अगर फाइनली मेरे पास 20 से भी टिकट ज़्यादा थे तो इसका एल्स मेरे एल्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0.2 यानी 20%। तो अगर उसने 20 से इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर बन गया है। अब इसको हम लोग टोटल कॉस्ट, इसको मुझको ऊपर भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ टिकट्स और इसके बारे में टोटल कॉस्ट is equals to
कितने नंबर ऑफ टिकट्स बाय किए, मल्टीप्लाई बाय टिकट प्राइस मेरी कितनी है, $20 है, टिकट अंडरस्कोर कॉस्ट, एंड फाइनली मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट। अच्छा, क्योंकि जब मेरे पास 10% डिस्काउंट है तो मेरे पास टोटल प्राइस कितनी बच जाएगी, 90%। अगर मेरे पास 0% डिस्काउंट है तो मैं 100% कीमत पे कोई चीज़ खरीदूंगा, मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर मैं 20% पे डिस्काउंट पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे उसकी प्राइस 80 पे बचेगी। तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, तो वो 80% हो जाएगा। तो उसकी इस तरह हमारे पास प्राइसेस आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइनली हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, योर प्राइस इज total cost. Okay, this looks good. इसको हम रन करते हैं एक दफ़ा, तो सी हमारी कॉस्ट सही आ रही है कि नहीं आ रही है। सो आई वांट टू बाय 9 टिकट्स और मेरी प्राइस कितनी आ गई, 180 आ गई। बट व्हाट इफ आई वांटेड टू बाय, मेरे पास कोई भी जो है डिस्काउंट मुझे नहीं मिला। बट व्हाट इफ आई वांटेड टू बाय अराउंड 8 टिकट्स पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 9 टिकट्स पे मेरी प्राइस 180 आ रही थी एंड 10 टिकट्स पे भी प्राइस 180 आ रही थी, बिकॉज जब मेरे पास 10% डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट के बाद मेरी प्राइस कम हो गई। तो रिपीट लूप का कॉन्सेप्ट यही होता है कि until a given condition does not become true, the loop will keep on repeating. Now we can move on to my favorite loop, that is while loop. While loop को हम लोग वैलिडेशन लूप भी कहते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन लूप को मैं इन दोनों को, रिपीट को मैंने वेरिफिकेशन लूप का और वाइल को मैंने वैलिडेशन लूप का, तो इस बात को मैं डिफेंड भी करूंगा आगे जाके जब मैं इसको। तो होता क्या है, कंडीशन of the given loop, या of the loop before execution of the, मतलब ये चलने से पहले, ये लूप एग्जीक्यूट होने करता है और उसके बाद चलता है। रिपीट के अंदर क्या होता है, रिपीट में पहले वो काम टास्क करता है परफॉर्म, और उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक कराता है। मगर इसमें क्या है, इसमें इफ यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट द लूप, कंडीशन, और ये चलता कब है, जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा। रिपीट के अंदर फर्क क्या था कि रिपीट कब रन हो रहा था, कि जब कंडीशन फॉल्स। डिफरेंस मैं इसका लिखता चलूं। रिपीट का पहला पॉइंट, runs while the condition is false, or runs until a condition becomes true. Point number 2 उसका क्या है कि it will first run and then it will check the condition. So this is the main difference between while and repeat. While loop के अंदर क्या होता है, runs while a condition is true. यहाँ पे कब चल रहा था, जब कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पे कब चला, जब कंडीशन ट्रू हो। और रुकता कब है, और until becomes false. तो while loop को रोकने के लिए हमेशा हमें कंडीशन को false करना पड़ता है। You have to do something to make the condition false, or otherwise it will not, or it will keep on running forever. दूसरा क्या है, meaning that check condition and then execute the loop body. तो लूप की बॉडी को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अब इसी सवाल को जो मैंने करवाया था, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स को रिजेक्ट कर रहे थे और -1 के इनपुट पे हम लोग
जब -1 के बराबर, इसी को अगर मैं while की, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सो मेरे पास क्या है, राइट सूडो कोड दैट इनपुट पॉजिटिव नंबर्स रिजेक्ट्स एनी नेगेटिव नंबर। तो भाई कोई भी नंबर इनपुट किया मैंने, इनपुट नम, कंडीशन क्या है, -1। तो जब तक while num इज नॉट इक्वल हो जाए तब तक आप ये लूप नहीं रोक सकते, ये लूप चलता रहेगा। तो आप क्या करो, आप इफ num इज ग्रेटर देन 0 तो उसको एवरेज टोटल में करवा दो, एट टोटल पॉजिटिव इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव प्लस num। इसको भी सही कर लेते हैं। else print negative number, please enter again, input num, और इसके बाद फिर मैं इसको एंड वाइल करूँ। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे पहले सवाल का। पहला जो सवाल मैंने रिपीट से किया था और अब मैं इसको वाइल से कर रहा हूँ। तो वाइल के अंदर आप देखें लूप की कंडीशन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, और रिपीट के अंदर हम जब इसको लिख रहे थे तो हमने इसको एंड में एग्जीक्यूट किया था। एक दफ़ा कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे रिपीट भी लिख देता हूँ उसका, इनपुट नम, या यहाँ इसको लिख देता है रिपीट इनपुट नम इफ नम इज ग्रेटर, if num is greater than 0 then total positive is equals to total positive plus num, else print negative number, please enter again। और यहाँ पे मेरे पास इसकी until num is equals to -1। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिपीट के अंदर इनपुट मांगता रहेगा बार बार जब तक -1 के बराबर ना आ जाए। तो -1 के बराबर आएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, और -1 के इक्वल नहीं है तब तक इसको, इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहे। So you can see the major difference in while and repeat is, यहाँ पे नॉट इक्वल का मैंने साइन डाला है और यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन डाला है। इसको एक दफा ओके, as integer, so dot right line, enter a number, while num is not equal to -1, num is then also positive, total positive। यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम लोग total positive, total positive is equals to total positive प्लस num। सही है ये हमारा। अगर ऐसा नहीं है तो so that right line negative number, then we would need, so num
line. So, okay. This looks promising. चेक करता है कि लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अच्छा. While num is not equal to -1 पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोग इसको करवा देते हैं. पॉजिटिव, और उसको भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा. काउंट और एवरेज हो गया. सही. And now what is missing here? सबसे पहले हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे. If I was to enter 5, 5 is not equal to minus, will become true. So 5 is not equal to -1, the condition will become true, and num, if num is greater than 0, then it will be added into positive number. But now मुझसे बोलेगा कि आपने negative number डाला है, and दोबारा try again करें. And then console.readline. और ये जाएगा. ठीक है. और इसमें कुछ missing है. Yes, your average is console.readline, right line. Your average is and average. So let's see if this is running right. Enter a number. I'm going to enter 5. तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है? Okay. Num is equals to लेना पड़ेगा इसमें हम लोग, और इसमें हमारे पास आ जाएगा num is equals to console dot readline. Okay, let's look. So let's see if this is working. Enter a number. I'm going to enter 5. सबसे पहले हमसे ये मांगा गया कि नम क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, काउंट क्या था, एवरेज क्या था. एंड देन हम लोगों ने नंबर इनपुट किया, उसको इनपुट करवा दिया. -1, if it's greater than 0, then total के बाद में ऐड करवा दिया, काउंट बढ़वा दिया. ओके. एंड व्हाइल seems to be working okay. Enter a number again. Okay, let's go back there. 5, 2, 4, 7, 35, 23. Okay. अगर मैं इसमें -3 डाल दूं तो मुझे बोल रहा है कि आपने नेगेटिव नंबर डाला है और एंटर अगेन करें. तो मैंने डाल दिया 54, एंटर नंबर अगेन 67, और मैं कहता हूँ कि -1. तो -1 से मेरा लूप ख़त्म हो गया और
मेरे पास एवरेज 23 आ गया इन सब नंबर्स का, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स का ही एवरेज, पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज ले रहा है। ओके, नोटिस इज दैट कि अगर मैं डाल दूं और उसके बाद फिर मैं दोबारा इनपुट ना दूं, इफ आई वर टू इरेज एंड दिस लाइन, जो मेरी इनपुट की लाइंस हैं, मैंने यहाँ पे लूप चलाने के बाद दोबारा इनपुट लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे लूप के दोबारा ना लूँ इनपुट, एंटर अ नंबर, so if I were to enter 5, तो ये क्या हो रहा है, तो ये मेरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुए जा रही है एंड इट इज गोना कीप ऑन रनिंग अंटिल माय मेमोरी क्रैशेस, क्योंकि ये मेरी मेमोरी को जो है वो यूटिलाइज करता रहेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे कोई भी नंबर डाला, फॉर एग्जांपल जब मुझसे यहाँ पे कंडीशन मांगी थी कि एंटर अ नंबर, और मैंने डाल दी थी -5 डाल दी मैंने, तो कंपैरिजन क्या हुआ, -5 is not equal to -1 and this condition became true। मगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि 5 कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ऑफ कोड दैट कैन 10 while loop will stop, अदरवाइज अगर कोई कंडीशन ट्रू हुई और उसको फिर फॉल्स करने को या दोबारा रोक के आपने दोबारा इनपुट मांगा नहीं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी और आपका जो है वो कोड एग्जीक्यूट होता रह जाएगा। अगेन मैं दिखा देता हूँ, if I'm entering 6, तो 6 will always be not equal to, पास ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। तो while लूप के साथ एक खासियत ये है कि while लूप क्योंकि पहले कंडीशन चेक करता है और फिर उसको ट्रू करके आगे बढ़ता है, तो while लूप can also be called a forever loop, a forever loop because it has to take another input or has to be made false while execution to make it stop running, otherwise ये रन करता रहेगा। while loop के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसपे हमें और मजीद इसकी जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका समझना आएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ while लूप का कोड लिखा हुआ है। इस कोड को हमें देखना है कि कितनी दफ़ा ये बॉडी हमारे पास किसी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा करेगी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग while loops, how many times will the loop execute its body? Remember that 0, infinity and unknown are legal answers। तो हमारे पास इन लूप्स को हमें देखते हुए, क्योंकि while loop है तो while loop कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, अगर ट्रू फॉरएवर है तो वो इन्फिनिटी टाइम्स चल जाएगा फॉरएवर की तरह, और अननोन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं जिसमें हमारे पास x जो है वो एज एन इंटीजर डिक्लेयर हुआ है, x की वैल्यू 1 है। while x is less than 100, आउटपुट x एंड कोई भी के अंदर x की वैल्यू +10 कर दो, तो x की प्रीवियस वैल्यू के अंदर +10 कर दो और फिर उसको एंड वाइल कर दो। सो ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 is less than 100, तो while x is less than 100, so 1 is less than 100 is become, और x की वैल्यू के अंदर 10 ऐड हो जाएगा। अब 11 होने के बाद ये लूप दोबारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर ये दोबारा रन करेगा 100, तो 11 is less than 100, तो दोबारा ये एक x की वैल्यू प्रिंट कर देगा और साथ में एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, और अब 11 की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 10 ऐड कर देगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगी वैल्यू, 22 is less than 100,
तो इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर कॉपी पेस्ट करके देखते हैं ये कितनी दफ़ा रन हो रहा है. Paste it into Visual Studio. इसको सही कर लेते हैं फॉर्मेट. Okay. Declare x is equals to 100. console.writeLine इसको कर लेते हैं आउटपुट की जगह. execute string पर भी खा और इसको डिम कर देते हैं. So this code seems to be working. Okay, इसको देखते हैं कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये हमारे पास टोटल कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 से लेके 91 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये लूप की बॉडी 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई वाइल लूप की. बिकॉज क्योंकि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी तो जब हमारे पास 91 पे पहुंचा तो 91 की वैल्यू 91 प्लस 10 जो था वो बन गया था 101. तो ऑटोमेटिकली जब ये 11th टाइम यहाँ पे आया तो 101 वाज नॉट इक्वल टू 101 वाज नॉट लेस देन 100. तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो ये लूप हमारा रुक गया था. ये हमारे पास हो गया और एक एरर डिटेक्शन हम लोगों ने कर ली इसकी वाइल लूप की. जो उसके 2-3 सवाल और थे वो भी देख लेते हैं. Declare max as integer. Max is equals to 10, while max is less than 10. Output count down plus max. Max is equals to max minus 1 and while. सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है मैक्स के नाम का और उसका डेटा टाइप इंटीजर है. सबसे पहले उसकी वैल्यू हम लोगों ने 10 कर दी. तो while max is less than 10, तो is 10 less than 10? No. तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई. तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने बोला था कि वैलिडेशन लूप होता है तो ये कंडीशन पहले चेक कर रहा है. तो अगर टेन is less than 10 कंडीशन ही हमारे पास फॉल्स हो गई. तो जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो ये लूप कितनी दफा चलेगा या 0 टाइम्स चलेगा. तो उसका आंसर जो है हमारे पास वो है 0. फाइनली थर्ड हमारे पास क्या है. इसको मैं विजुअल स्टूडियो में एग्जीक्यूट नहीं करूंगा भी तो उसके अंदर जो है पहली लाइन के अंदर बादी जो है वो एक्सेप्शन का एरर आ जाएगा. तीसरा ये है डिक्लेयर x as integer x is equals to 250. count is equals to x mod 3. तो mod समझ लें. mod क्या होता है. mod का मतलब ये होता है कि मैं 250 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से और जो उसका रिमाइंडर होगा वो मैं काउंट की वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दूँ. तो mod जो है वो नंबर को डिवाइड करवाता है और रिमाइंडर जो है वो सेव करता है. तो अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करवा दूँ 3 को 250 से तो उसको देखते हैं हमारे पास कितनी दफ़ा चलेगा ये लूप. तो इसको कॉपी करके ज़रा विजुअल स्टूडियो के अंदर रन करते हैं. ओके इसकी ज़रा हम लोग
इंटीजर उसकी डेटा टाइप हो गई, एक्स की वैल्यू हमने असाइन कर दी, आउटपुट के लिए यहाँ पर रह जाता है कंसोल डॉट एक्स लिख देते हैं। सो ये कोड हमारे पास ऐसे शुरू हो रहा है, एक एक्स हमारे पास 250 dB और काउंट है हमारे पास, जो कि एक्स और एक्स को जब मैं 3 से डिवाइड करवा रहा हूँ उसका रिमाइंडर जो बच रहा है वो मेरा काउंट कर रहा है। तो इसको रन करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये 250 जो है ये इन्फिनिट टाइम चल रहा है। इसका मतलब है, इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि इन्फिनिट, ये भी देखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर 250 को डिवाइड करवाता 3 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 8 24, 8 24, यहाँ पे 24 आ गया, और मेरे पास यहाँ पे 1 बचता और पीछे 0 आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आता, 83, और मेरे पास यहाँ पे 9 मेरा असल मोड होता वो आ जाता हुआ। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाती, काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। तो काउंट वाज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाती, 0 के बराबर 1 नहीं था, तो आउटपुट एक्स की वैल्यू रहती। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 250 है, तो 250 हो गया, और काउंट इज इक्वल टू काउंट मॉड 3। अब इस लूप के अंदर दोबारा काउंट की वैल्यू जो है वो उसका मॉड 3 लिया जा रहा है। तो जब मेरे पास 1 का मॉड 3 होगा, जब मैं 1 को काउंट 3 से डिवाइड कराऊंगा, तो 3 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 zeros are 0, और यहाँ पे 1 minus 0 will be 1। फिर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 1 है, और काउंट जब भी मॉड हमेशा रिमाइंडर 1 देता रहेगा। काउंट कभी भी 0 के बराबर आएगा नहीं, will be giving me a remainder of 1, it will be never be equal to it will never be equal to, this loop will run forever। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास, इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। while x is equals to output x def 10, so ये मेरे पास मॉड की एप्लीकेशन थी। डेफ क्या करता है, डेफ मेरे पास अगर मैं और मैं 100 डेफ 10 कर रहा हूँ, होता है, तो ये जो पास मेरे सवाल का, दैट इज रेफरेंस्ड एज माय रिमाइंडर होता है, वो मॉड कहलाता है। अगर और अगर कोई भी चीज क्वोशंट है तो वो डिफ कहलाती है। तो और x इज इक्वल टू x डिफ 2 और एंड वाइल, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कितनी दफा चल रहा है। कमेंट कर देते हैं। Finally, this is the last error detection question. Scroll again. X is equals to 100. Console that right line.
Sir, div will be backslash in Visual Basic. Backslash. This is slash, sir. Div done and types div. So we can write यहाँ पे comment करके लिख देते हैं users के लिए हमारे के div in VB. हो गया. Okay. Times with this one 1 2 3 4 ये 7 times execute हुआ. अब इसकी लॉजिक के अंदर मैं इतना नहीं जाऊंगा, बस just to give an idea कि how the while loop works is that कि while loop पहले condition check करता है, उसके बाद execute करता है. while loop forever loop भी हो सकता है अगर उसकी condition हमेशा true रहे और उसको रोकने के लिए हम लोग मजीद कोई input ना मांगे. और while loop जो है वो zero भी हो सकता है कि अगर पहली condition उसको false मिल गई तो वो loop कभी execute होगा ही नहीं. तो these are some of the conditions जिनके ऊपर while loop चलता है. while loop की थोड़ी सी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. एक पास पेपर का सवाल भी सॉल्व करते हैं while loop के लिए. So I have some pre-code here that I could share. पहले एक पास पेपर का सवाल करा देते हैं, फिर ये वाला करते हैं. Okay. So write an algorithm using pseudocode or flowchart, or in my case with VB, which inputs a whole number which is greater than 0, calculates the number of digits in the number, outputs the number of digits and the original number. Example 147 would give an output of 3 and 147. मतलब ये कि मेरे पास मुझसे बोले कि भाई एंटर नंबर्स और उसके बाद फिर हर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 डाला तो 1000 के अंदर 4 डिजिट्स होते हैं, तो वो और साथ में लिखा हुआ है कि इसके अंदर 5 डिजिट्स थे, तो 5 की वैल्यू लिखी हुई है लाइक दिस. सो इफ 147 हैज 3 डिजिट्स तो मेरे पास आउटपुट लिखा हुआ आना चाहिए 3, 147. सो आई कैन डू दिस विद अ व्हाइल लूप. digit counting algorithm using while loop. Okay, so what I need to do first is declare a variable called digit, dim count as a variable that will count how many numbers were there, and dim number as integer. यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और उसके बाद फिर तो while सबसे पहले तो we will ask the user to input a value, input a number, and num is equals to console.readline. Okay, so मुझसे जब ये मांगेगा इनपुट तो उसके बाद फिर मेरे इनपुट को चेक करेगा while loop. While but before give the value, while digit, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है डिजिट के नाम का और उसके अंदर मैंने नम की वैल्यू स्टोर करा दी. सो नम की राइट हैंड साइड पे वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी. सो इफ आई राइट 1000, डिजिट विल बिकम 1000. while digit is greater than 0, जब तक 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा digit is equals to digit upon 10 equals to count plus 1, and that's it. और उसके बाद सवाल क्या था, एक दफा दोबारा देखना इसको.
calculates the number of digits in the number, outputs total number मेरे पास कितना था होगा तो मुझे ये बता दे कि console.write line total number of digits in num की वैल्यू के अंदर were and count. So what will this do? सबसे पहले क्या करेगा ये एक नम की वैल्यू ले लेगा उसके बाद इसको पहले रन करते हैं फिर इसको समझा भी देते हैं फिर उसके बाद ये डिजिट के एलोकेट कर देगा और डिजिट को देखेगा 0 से बड़ा है कि नहीं है और एंड में मुझे बता देगा कि इस वैल्यू के अंदर जो आपने ऊपर डाली थी नम की वैल्यू उसके अंदर इतने डिजिट्स थे let's just see if it's working right अगर ना कोई डिबगिंग होगी तो डिबगिंग console.read key okay this seems good input a number so I'll put in 1000 10,000 okay so the total number of digits in 1000 were 5 सही चल रहा है इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं यहाँ पे स्पेस दे दी एंड यहाँ स्पेस दे दी now let's see if this is working so 7866 total number of digits in 7866 were 5 no this doesn't seem right refresh करते हैं the total number of digits in 1000 were 4 so basically ये कोड कर क्या रहा है ये कोड ये कर रहा है नम की वैल्यू असाइन कर दी तो उसने देखा कि डिजिट 0 से बड़ा है कि नहीं एंड देन इसने क्या किया कि नहीं था सो फॉर इंस्टेंस 1000 was greater than 0 this condition became true तो मेरा लूप एग्जीक्यूट हो गया तो डिजिट इज इक्वल्स टू डिजिट डिवाइडेड बाय 1000 तो डिजिट के अंदर मैंने क्या वैल्यू सेव करवा दी डिजिट डिवाइडेड बाय 1000 तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 10 करने की वजह क्या है कि whenever I divide something by 10 तो that value moves one decimal place backwards तो जब मैंने पहली दफा करवाया तो ये सॉरी 1000 से डिवाइड होके 100 हो गया और काउंट की वैल्यू क्या हो गई काउंट की वैल्यू 0 थी काउंट की वैल्यू हो गई 1 फिर ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ 100 इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे मेरे पास 100 हो चुका था 100 को जब मैंने यहाँ पे डिवाइड करवाया 10 से तो ये 10.0 हो गया और मेरे पास इंटीजर में हमेशा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू काउंट होती है तो ये वाली जरूरत नहीं रही बिकॉज मेरा डेटा टाइप इंटीजर तो 10 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 2 फिर ये दोबारा चला अब ये 10 हो चुका है 10 होने के बाद जब इससे 10 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया 1.0 1.0 होने के बाद ये 3 हो गया और 3 होने के बाद जब ये 0 तो ये लूप 4th टाइम एग्जीक्यूट हो गया एंड नाउ 1 डिवाइडेड बाय 10 1 और यहाँ पे क्योंकि एक दफा लूप चल चुका था तो काउंट की वैल्यू 0.1 या क्योंकि वाली चुका है तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गई और मेरा लूप रुक गया इस तरह मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे काउंट हो गए इसकी एप्लीकेशन जो होती है सबसे बड़ी ये होती है कि हम लोग अपने नंबर ऑफ पासवर्ड ट्वाइस जो लिखते हैं when we enter a key into our phone when we exceed the limit of 5 times then our and gives us a break of 30 seconds or 1 and you should stop. The same application of digit counting goes into length check and it also goes into making ATM machines. So we write a while code. If the pin doesn't match 5 times or 4 times then it is checking कि कितनी दफा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर क्या होता है
जो है वो सीज कर देता है या उसको जाम कर देता है, या फिर वो बोलता है। तो while loop is for validation, इसकी सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, and for security purposes, because it also always checks the condition before executing the loop body, so it is also used for security and validation purposes. यही पासवर्ड वाली एग्जांपल को एक while loop और repeat loop का कंपैरिजन करते रहे. So Zafar, just for info, how much time do we have left? We are well above time. If you like to wind up, we can wind up. We have Because well we above have time. got just 5 minutes. Yeah. If I पासवर्ड की एग्जांपल देते हुए पूरा इसको वो करता हूँ, एक while loop और repeat loop का कंपैरिजन देते हुए. So ये वाली बात हम लोगों ने कर ली. तो जो काम हम रिपीट से कर सकते हैं वो while से भी कर सकते हैं, मगर कि एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, एक दफ़ा कंडीशन बताता है. while loop जो है कंडीशन चेक कर लेता है, तो इसलिए रिपीट लूप को वेरिफिकेशन लूप कहते हैं. कि मैंने एक काउंट का वेरिएबल लिया और मैंने बोला कि एंटर पासवर्ड टू, सो मांगा गया, तो मैंने यूजर को बोला कि यूजर वेरिएबल था दैट आई आस्क्ड द यूजर टू इनपुट. तो व्हाइल यूजर पासवर्ड और ऊपर मैंने पासवर्ड की वैल्यू असाइन की हुई है. यस, तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है पासवर्ड की जो कि है एलिस. तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है LSW123. जब मैं ये डालूंगा होगा यूजर के इनपुट किए हुए पासवर्ड से. तो यहाँ पे ये यूजर इनपुट करेगा ये वाली वैल्यू, तो यूजर पासवर्ड और पासवर्ड कंपेयर होंगे और यूजर हुई है. तो इसको मैंने while लूप से कैसे सॉल्व किया कि while यूजर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू काउंट इज लेस देन 5, तो मेरे पास 5 ट्राइज होंगी और 5 जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो इस लूप की कंडीशन चलने की कंडीशन ये है. तो काउंट अगर उसने गलत पासवर्ड डाल दिया तो और बोलो एक्सेस डिनाइड ट्राइज रिमेनिंग एंड काउंट. तो मेरे पास नंबर ट्राइज आपके रह गए, तो दोबारा वो पासवर्ड मांगेगा. अगर उसने सही पासवर्ड डाल दिया, if user password is equal to password, then console.writeLine welcome, else console.writeLine you have exceeded 5 tries account lock. इसको एक दफा लूप को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. Sir, I believe we are well above time. This was comprehensive. If you like, you can share these files with me. So I'll put these links in the description of the video underneath it. So people would be watching it over later. And if there will be any question, they'll ask and then we combined can answer those. So we are going to wait. सर आवाज आ रही है? हेलो सर, जफर आवाज आ रही है आपको? हेलो.
Hello. Yes, sir. Sorry, my internet connection is You not might disconnect together. helping me uh, Acha, a acha. lot. Okay. So, thank you very much, sir. It was quite comprehensive lecture. Few things I like to talk about before we go offline and wind up this session of the podcast. First of all, it was a very good podcast, and you tried explaining repeat loop, their needs, past paper questions, your own idea of it, and especially I like the idea of verification and validation. That for validation we use while loop, while for verification we use repeat. That was good. And viewers, I would like to talk about one thing, that practicing at O level and AS level the pseudocode with the help of Visual Basic is a very good idea. While at A2, if you use Python or Java, whatever the language that you like to, or Pascal, that is a good idea. So I would also suggest teachers to use Visual Basic. As you would have seen already in Sir Muhammad Ali Faisal's lecture, that whenever he copied the pseudocode to Visual Basic, hardly he has changed couple of things like declare to dim and output to console.writeLine or readline for input. Just three changes and the whole code of the source code became the code of Visual Basic. So teachers, it's a good idea. Students, it's a good idea to use Visual Basic. All right. At O levels, whatever sir taught is actually a bigger part of the pseudo codes. If you could see from the past papers, at O levels, loops are divided into two areas: count based and condition based. And in condition based, there are two types: preconditions, which we call for while, and post condition, which we use these post condition words for repeat. Sir, you are there with me? I am, sir. I am. Yeah, आपकी आवाज़ yeah. थोड़ी कट रही थी. जी हाँ, my internet connection today is very weak. That is Nowadays, that is a lockdown, problem with all of us yeah, guys. everyone is using internet a lot. So, sir I will request sir to provide these slides, links, and file links to me so that I could put the link underneath this video. Before we get off, I would like to talk about a bit for COVID-19 season. I hope that everyone would be mostly staying at home and staying safe. Although the conditions of lockdown are being eased up and governments are uh, conditionally opening these lockdowns, and people are nowadays getting out, and mostly people are taking uh, if the permission to get out is now there. So they think that they are permitted to get back to their lives the way it was before the COVID. No, it is not. When you get out of the home, you should be careful. You should be careful for yourself, for your family, because if you become the carrier for any reason, it would be disastrous for the whole family. So stay home, stay safe. So one thing is greetings in the times of COVID-19. I understand that our social lives are filled with ritualistic touching, from hugs to high fives to pinky swears. These acts of interpersonal contact creating feeling of connection between people, both psychologically and literally. So, but they also give pathogens, the virus that causes this COVID, or the name of the virus we all know is Corona, and it is greetings. It is an efficient way to move from person to person. So, in this time of social distancing, uh, what kinds of greetings should we use? What makes one kind of greeting more infectious than other? What actions can we take to feel close even when we must keep our distances? So I would say that instead of shaking hands or Botswana handshake or high fives or pinky swears or fist bumps, it is a good idea that we used
elbow bump. We don't use hongies. Hongies are actually whenever we hug and we touch face to face. We should avoid it. There is a new shake introduced by Chinese, the Wuhan shake, where we actually touch our shoes together, and then we have ankle shake where we touch our ankles together or we hold legs instead of those. But like in Islam, we can always put our hand on the chest and bow a little to greet others, or just to nod to others to greet and raise our hands, and we can air hug or things like that. So it is also a good idea to use victory. You can use finger hearts, you can use shaka. So these are unusual times. While a natural disaster or terrorist attacks becomes an occasion for all of us to draw together, the coronavirus pandemic requires us to isolate and stay apart. It is important to exercise maximum caution, without which it becomes hard to stay safe. It's also important to remember that human connections is indispensable for our collective resilience. So every inch and every foot that we physically place between ourselves and another must become a thought as to how we might be help to that other should the need arise. So become very much careful. I pray for all of us to remain safe during these COVID-19 times. Be careful, wear masks, wear hand gloves, plastic gloves, and all. So, with these lines, I would like to uh, take permission to call this show off. I hope that this show is helping during